and Adan, you also mentioned that we are one, but our avidya accounts are separate. Thank you. So now, do we have our dear friend Professor A.K. Jain, MDI Gurgaon, to enlighten us? I extend a warm welcome to our distinguished guest, Dr. A.K. Jain, who is working as a Professor of Leadership, Emotional Intelligence and Organization Design, Dean Accreditation and Ranking, Online PGDM and School of Management for Financial Institutions and Management Development Institute, Gurgaon. He has established a Center of Excellence for Indian Thought and Management. Professor Jain is a visiting professor to several international universities, including Aarhus University, Denmark, IULM University, Milan, Italy, University of Free State, South Africa, and Indian Institute of Management, Lucknow, Ranchi, Bodh Gaya, and Kozhikode. Professor Jain has received an award for extraordinary performance for Aarhus University for his research and publication, and from National Academy of Psychology, India. He has also worked as the Director of Institute of Management Studies, Ghaziabad, and received a prestigious award of Most Charismatic Leader in Management Education and Education Post. He has published 72 research articles in high-impact journals, including Journal of Managerial Psychology, International Journal of Hospitality Management, etc. He has research interest in the field of leadership, emotional intelligence, employee voice and silence, psychology, well-being. He has faith in Indian thoughts emanating from Upanishads, Ramayana, Mahabharata, Srimad Bhagavad Gita, Tattvavat Sutra, Tipitaka, etc. He believes in traditional Indian knowledge system and practice concepts like Vasudhaiva Kutumbakam, Ahimsa Paramo Dharma, and Sarve Bhavantu Sukhinaha. So, ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Professor A.K. Jain. Thank you so much. First of all, I would like to thank Dr. Tomar for organizing this wonderful conference, Shweta ma'am, and I can see many friends who were also available last year to attend this conference, and some are new faces, and I trust that all of you will join next time. Can we think for the next year, maybe somewhere else? But this will be a continuous efforts from our side, and I am very much there, and I expect all of you will be supporting this big cause led by Dr. Tomar. It's amazing, and we all are here. Thank you to all of you, and thank you God for giving us this opportunity to be available today together to attend this conference. To begin with, like everybody has its own understanding of the concept of Seva. So in my view, I will just share what Seva means to me from practical side, or maybe from theoretically also. Theoretically, I can say someone who was a fisherman asked Lord Mahavir that I am a fisherman, how can I practice ahimsa? Because my job is to catch fish and sell fishes. So he says, wonderful thing, even a fisherman can practice ahimsa. So Mahavir said, whenever you go to fishing, just leave the first one who comes into your net. तो जो पहली मछली है उसको छोड़ देना, फिर बाकी अपना धंधा जो है कर लेना. और उस बंदे ने वैसा ही किया. थोड़े समय बाद उसको मनाया कि चलो अब मेरे पास पर्याप्त है, मैं एक की जगह 2 फिश छोड़ सकता हूँ, 2 का जीवन दान दे सकता हूँ. और इस तरह करके उसने 3, 4, 5, और एक दिन ऐसा आया कि जब उसने ये फिशिंग का काम छोड़ दिया और वो भगवान महावीर का एक बहुत बड़ा शिष्य बना. कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, और शुरुआत करने का उचित स्थान है अपना घर. दूसरा एग्जाम्पल मैं अपने मदर इन लॉ का देता हूँ. शी लिव्स इन पीतमपुरा इन न्यू दिल्ली, और उनके घर में कभी भी कोई भी चला जाए तो उनका जो पहला है जो भाव है, उसको फूड सर्व करने का भाव रहता है. कोई भी कहीं से भी, मैं बोल दूँ आप में से कोई भी चला जाए उनके पास, वो इतने प्रेम से खाना खिलाती है, इतने प्यार से सर्व करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे. और उसके नतीजे 2 हुए हैं जो उन्होंने मेरे को बताया कि एक बार वो रिक्शा से कहीं जा रही थी और उनके रिक्शा को कुछ एक्सीडेंट हुआ. आगे आने के जैसे होता है ना, रिक्शा में ठोकर लगी, वो गिर पड़ी. सामने से कोई आ रहा था, उन्होंने उनको लपक लिया, जैसे कोई कैच कर लिया.
वरना बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। कहीं पार्क में घूम रही थी, ठोकर लगी, गिर गई, किसी ने पीछे से पकड़ के उनको रोक दिया। ईश्वर आपके साथ हमेशा है यदि भाव सेवा का है। दूसरा, इस प्रेजेंटेशन में व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक प्रेजेंटेशन दैट इज मोर रिसर्च ओरिएंटेड, और द प्रिडिक्टर्स ऑफ सेवा, and these are the objectives. So beginning from Bhagavad Gita, and this is a very popular shlok from chapter 3 and 2021, and that talks about ki like how duty can lead to perfection. सिर्फ आप अपना कर्म करिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। और ये बात बार बार निकल के आ रही है, जो कि भारत के डीएनए में है। इसको बार बार समझाने की जरूरत भी नहीं है कि दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ निष्काम कर्म, सेल्फलेस सर्विस, लोक संग्रह, ये कंसेप्ट बार बार आ रहे हैं। बट एज ए प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इन ए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेवलप ए मॉडल हाउ वी कैन प्रमोट निष्काम कर्म ग्राउंडेड इन श्रीमद् भागवत गीता, and also you can look at this. There is a theory by Albert Bandura, theory of social, this is called theory of human agency, agentic perspective, and it is also talking about the role modeling, and Gita is also talking about the role modeling. Then the second one, this is another shloka called Karmanyevadhikaraste, that is again known to us. So one, if he or she fulfill his prescribed duty, then definitely you achieve salvation. So that is another shlok which I am quoting, and then there are concept of detachment and non-attachment, and how we can practice that. Gita also talks about it. Then I am also quoting here, so this is my just literature review, you can say, in a typical scientific paper. I am also now mentioning Guru Granth Sahib, and Naam Dan or Isnan, Guru Mukh Naam Dan in Isnan. So Guru oriented seeker receive the wisdom of meditation, charity and cleansing to attune to a blissful state. Again they are talking about कि भगवान का नाम आप जपते हैं तो आपका मन पवित्र हो जाता है, आप डिवाइन कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। ये बात रामायण में या श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति के कॉन्सेप्ट में भी आती है कि आप ईश्वर का नाम जपें जिससे मन में पवित्रता आए। देन दान, जिससे समाज में कनेक्ट बने आपका, दान का भाव, जो शारदा मैडम ने अभी दान के ऊपर ही बात की है। देन स्नान, यानी कि शारीरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता, दैट इज ऑल्सो लाइक आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वन इन गुरु ग्रंथ साहब। जैन धर्म में दान का कॉन्सेप्ट है, विच शारदा मैम ऑल्सो टॉक अबाउट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दान: आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान एंड अभय दान। और शास्त्र दान इसमें हम लोगों के लिए जो यहाँ सब मौजूद है, यानी कि द दान ऑफ नॉलेज, जो हमारे पास नॉलेज है वो समाज में कैसे यूज हो सकती है। देन दीज आर द केस स्टडी, रियल केस स्टडी कमिंग फ्रॉम अक्षय पात्रा, दैट इज वेरी फेमस फाउंडेशन, एंड दे आर फोकसिंग ऑन जीरो हंगर एंड क्वालिटी एजुकेशन। The second case study is the langar in Sikhism, that is communal meal, and you all must have, I think, went to at least 1 or 2 Gurudwara, whether in Amritsar or in New Delhi or anywhere else. आपने देखा होगा वहाँ communal जो किचन है कैसे काम करती है, कैसे लोग सेवा करते हैं। हो सकता है वो मर्सिडीज में आया हो बंदा, लेकिन आपके जूते उठा के ऐसे रखेंगे जैसे कि कोई फकीर हो, और किस तरह से वो लोग सेवा करते हैं गुरुद्वारे में, वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है भारतीय संस्कृति का। Now I am coming on what I am concluding in the form of a model, the antecedent of Seva Paramo Dharma. That is my takeaway from the literature, from Indian wisdom, and from the practice like of langar and Akshay Patra case study. So these are the 5 levels. Now the question is that how we can promote the idea of Seva Paramo Dharma in organization or in society. So these are the 5 level of variables. One is individual level, second is group level, third is task related leadership, and then societal. So these are the few things which we can discuss now in this model. And you can see that here are the predictors. The point which we are making here, that number 1, altruism. Altruism means कि आप में पहली बात तो सेवा करने का भाव ही होना चाहिए। यदि ये भाव ही नहीं है तो आपके कर्म तो उस दिशा में जाएंगे ही नहीं। तो पहला है भाव के लेवल पे, जैसे भगवान महावीर ने कहा था कि आप एक मछली छोड़ दो, तो ये एक भाव है केवल।
यदि भाव में परिवर्तन आ जाएगा तो आप सेवा की तरफ बढ़ेंगे। हेल्थ क्या है? आपकी ऊर्जा। आप कितनी भी बातें कर लीजिए, आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो किसकी सेवा करेंगे? अपने शरीर को ठीक रखना ही सबसे बड़ा सेवा है। यदि आपका शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है और आप बीमार हैं तो समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है आपका। इसलिए दूसरा नंबर है हेल्थ। तीसरा है माइंडसेट ऑफ ओनरशिप। ये मेरा काम है, मुझे करना है। बहुत सारी केस स्टडीज में आता है कि ये मेरा काम है। तो ये हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। दूसरा है इंटरपर्सनल ट्रस्ट। यदि मेरा संबंध ही नहीं है आपसे तो मैं क्यों आपसे आग्रह करूंगा, क्यों आपसे कोई सेवा लूंगा, क्यों आपसे मैं कोई परोपकार लूंगा? फिर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट, वो है इंटरपर्सनल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो कि हमारे यहां बोला गया है परस्पर देवो भव। हम सब लोग एक दूसरे के लिए देवता की तरह है। कम्युनिटी सर्विस। आप जॉब कोई भी करें, पुलिस में करें, डॉक्टर हैं, टीचर है, भाव क्या है? कम्युनिटी सर्विस। वी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू वन गोल, दैट इज द सोसाइटी एंड नेशन सर्वे भवन्तु सुखिनम। देन रोल मॉडलिंग। जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस भी स्तर पर हो, आप एक रोल मॉडल की तरह देखे जाते हैं। लोग आपको देख रहे हैं। यू आर अंडर सर्विलेंस, स्पेशली योर सबऑर्डिनेट्स आपको देखते हैं। यदि वो देख रहे हैं तो ऐसा आचरण करिए जो श्रेष्ठता का हो। महाभारत में एक राजा शिबी हुए हैं, ही इज माय रोल मॉडल, और उनकी बहुत सुंदर कहानियां हैं, सुनने लायक है। कभी अवसर लगे तो राजा शिबी के बारे में जरूर सुनिएगा। देन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। इट मीन्स दैट somewhere we must focus on these values which is already been inculcated. These 5 set of predictor leads to our spiritual belief in the form of nishkam karma yoga, lok sangrah, dan, purpose or meaning of life, and which leads to seva, paramo dharma, selfless service rendered with affection. These are like western psychological theory which can be used to explain this model. At the current literature, my colleague Professor Ashish Pandey is here. He has published a wonderful paper and on the karma yoga, and he has published a scale, very useful scale. Dr. Tomar has recently published a book consisting all kinds of scale, and which is a wonderful base to work upon for research scholars, and I am definitely looking forward to work with you on this. Then Charles Shaw has published wonderful paper on karma yoga for superior business performance during Industry 4.0. So thank you very much. I will stop here, and it's so kind of you for giving me this opportunity. Thank you very much, Jain Sahab. On behalf of United Consciousness, I thank Professor A.K. Jain for coming on to the platform of United Consciousness and sharing his views. That was quite inspiring, Jain Sahab, that you mentioned that we don't need to go to Himalaya, we can start from our alay itself. And you mentioned about your mother also, how our good karmas comes back to us, and संपत्ति वही होती है जो विपत्ति के समय काम आए, और हमारे कर्म ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं. And you mentioned about importance of swadharma, seva bhav, trust, and Navada Bhakti, Akshaya Patra, lots of things including Langar you introduced. Thank you very much for being here and inspiring all of us. Now we have our friend who is also observer, but now will be observed. So Professor Ashish Pandey, IIT Mumbai, over to you.